Good morning, dear students. I hope you all are very fine today. So, let us start with our next lesson, that is the force and pressure. Okay, so see, basically, we will start with the force. What is mean by a force? So, a force is a push or pull. The thing is, let me explain. Whenever we try to, if you want to move something, what will you do? You will touch it and you will try to move that in the way you want to move. You will push it, okay, or in other case you may pull the object. So this push or pull which you give to an object, this is nothing but a force. Okay, in order to move the object from one place to other, you either push it or pull it. So this force is so this push or pull is nothing but a force. Okay, so if you want to define force, a force is a push or pull, or it may involve both. If both are if we are pushing and pulling at the same time, then that is also a force, or if we are doing any one of them, then that is also a force. So a force cannot be seen. Can you see the force? हम क्या force लगा रहे हैं? Can you see? No. But the effect of force can be seen. Yes, you are pushing. Energy दिखती है. Force is a kind of energy. The force cannot be seen. But उसका जो what we can say, the effect of force can be seen, and we can feel the force. If someone is pushing you or someone is pulling you, yes, you can experience the force, right? So you can feel the force, or you can see the effect of a force. Okay, so you see there are two types of force as we have seen, a push or a pull. So let us see a push, a force to move an object away from you. So that is a push. What is pull? If you want to take any object, if you want to bring the object near you, you will pull that object. Okay, then this is a force. In both the cases, push or pull, it is a force only. But when sometimes there is combination of both, like suppose you are playing a guitar, okay, or you are scrubbing the floor, or you are sawing a wood, or rowing a boat, then that involves push and pull. So both goes on simultaneously. So but that doesn't change the fact this is also a force. So you are applying force. Okay. So this is the basic concept of a force, and this is all about the force. Now see, for the force to be applied, you need to interact with the object. It is like that, ऐसे magician के जैसे ऐसे कुछ किया और कुछ हो गया, कुछ हिल गया. I'm just doing, just moving my hand, just trying to suppose एक person है, he is standing back side of a car, वो बस खड़ा है और ऐसे नज़रों से उसने कार को आगे कर दिया. No. So what we need to do, we need to interact. Interaction होना चाहिए. तो कार को अगर आगे आपको, if you want to push the car, if you want to move the car in forward direction, what will you do? You will have to touch it and you will have to push that car, then the car will move, right? So what is this? You are touching that car means you are interacting with the car. Interaction हमेशा physical touch से ही नहीं होता है. There is also another kinds of interaction that we will learn early. But then पहले हम देखेंगे कि there is interaction which is needed for the force. The force, if you want to apply, there should be an interaction between both the objects. Okay, so this is it. Then so let us explore the forces now. कि force अगर हम apply करें तो उसका क्या effect होता है, that we will see. So suppose there is a box, a rectangular box is there. और जस्ट इमेजिन कि टू फोर्सेस आर अप्लाइड. अभी जब मैं बोल रही हूँ फोर्सेस अप्लाइड मतलब क्या, हम एक तो मैं हूँ और एक कोई भी, मतलब एक आप होगे और आपका कोई फ्रेंड या समवन एल्स. ओके, तो दोनों लोग उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. यू बोथ आर अदर पुलिंग इट और पुशिंग इट. वी विल सी इट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. बट सो दैट यू टू इमेजिन. सो सपोज एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है and you are trying to, you are giving the force, you are giving two forces to it, but you are giving both the forces from the same side. तो क्या होगा, वो बॉक्स आगे जाएगा. ओके, जस्ट डायरेक्शन में you are giving the force, in the same direction the box will move, right? Now this kind of force is called as the unbalanced force, that is acting in same direction and that is combined. Okay, so both the forces are combined and the object will go in the same direction. तो इस केस में क्या होता है, दोनों को like how much force is getting applied on that object,
सो दैट विल बी द सम ऑफ बोथ फोर्सेस F1 प्लस F2, तो ही आपको मिलेगा टोटल फोर्स. ओके, this is the case when both the forces are applied in same direction. Now let us see the next case where both the forces are applied on the same object but from the opposite direction. Okay, totally from the opposite direction. Then you see F1 and F2. So what will be the resultant? Where will the object move? That will depend. दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं, तो जो फोर्स ज़्यादा है the object will go in that direction. If F1 is more than F2, it will move towards that direction. If F2 is more, it will move accordingly. तो जो फोर्स ज़्यादा है accordingly the object will move. Okay, लेकिन इस टाइम हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल फोर्स. इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नेट फोर्स और द टोटल फोर्स विच इज गेटिंग अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट, that will be the difference of both the forces, right? तो जो फोर्स ज़्यादा है उसमें से कम वाला फोर्स सब्ट्रैक्ट करना है, आइदर F1 माइनस F2 और F2 माइनस F1, डिपेंड्स. जो बड़ा है द नंबर विच इज़ बिगर दैट वी हैव टू from that we have to subtract the smaller number. So the effect of the force depends on the net force acting on it. तो दोनों में से जो फोर्स ज़्यादा है accordingly that object will show the effect. Okay, so this kind is the unbalanced force. अभी और एक बात है कि दोनों लोग जो है वो फोर्स तो लगा रहे हैं, although if you are they are applying trying to both the forces are applying in the direction of that object. अभी क्या कर रहे हैं? they are just pushing the object. Now in this case they are pulling the object. दोनों फोर्स से हम क्या कर रहे हैं? दोनों अपोजिट साइड से ऑब्जेक्ट को we are pulling. One is pulling on that side, one is pulling on this side. तो इसमें क्या होगा? टग ऑफ वॉर खेलते हो आप, उसमें क्या होता है? जो टीम में ज़्यादा लाइक फोर्स अप्लाई किया, the रस्सी विल गो इन दैट डायरेक्शन. ओके, द रोप विल गो इन दैट डायरेक्शन. सो द सेम वे अब देखो, जो फोर्स ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट विल मूव इन दैट डायरेक्शन. लेकिन अगर दोनों फोर्स सेम है तो कभी ऐसे टाइम आता है जब द रोप इज नॉट गेटिंग पुल्ड इन एनी साइड, तो उसमें क्या होता है कि दोनों जो फोर्स हो गए वो बैलेंस्ड हो गए. क्या हो गए? दोनों फोर्सेस दे आर बैलेंस्ड. तो दोनों फोर्सेस बैलेंस कब हो गए? जब दोनों इक्वल है ना. इफ F1 इज इक्वल टू F2, दोनों ये भी उसी फोर्स से खींच रहे हैं, ये भी उसी फोर्स से खींच रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव. सो द नेट फोर्स विल बी जीरो बिकॉज वी विल सब्ट्रैक्ट F1 माइनस F2 एंड एज बोथ आर इक्वल, सो दिस विल बी द बैलेंस्ड फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव. व्हाट वी विल से? द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज जीरो. कितना भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसका इफेक्ट क्या है? नहीं है. सो वी विल से द फोर्स इज जीरो. ओके, सो दिस इज द केस. देन we have seen so many effects this we can see so many effects of force. जब हम force apply करते हैं तो क्या क्या effect we can see the effects like force can make an object move from the rest. कोई object rest में है, it can be moved by applying a force. We can stop a moving object. ब्रेक लगा लिया साइकिल को तो we are applying a force and we are stopping that object. Then a force can change the speed of the object if it is moving. जैसे कि आपने फोर्स लगा दिया, हैंडल है, हैंडल को फोर्स लगा दिया, यू जस्ट मूविंग इट असाइड, सो ऑफ कोर्स द डायरेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल मूव. या फिर कोई क्रिकेट खेल रहा है, बॉल इज कमिंग, इफ यू आर जस्ट हिटिंग द बॉल विद अ बैट, व्हाट यू आर डूइंग, यू कैन सी इन द डायग्राम. So that time you are actually changing the direction of object. You are applying force by the help of your bat, right? Force can also change the shape of an object. डफ ले लिया आपने, फिर चपाती रोल कर रहे हो, you are applying force that is changing the shape of object. Rubber band को stretch किया, it is changing the shape of the object, right? And force जो है वो it can like show many of these effects, this effect, or it can also show other effects, the effects other than this. So you can see when you stretch a rubber band, or when you press a sponge, or when you squeeze a spring, what you are changing the shape, right? So this is how is the force. Then if you drop a glass, it will break into pieces. Okay, you are tearing a paper, then you just crump an empty can. तो ये सब क्या? You are actually applying force on it. So that is bringing a change in this object. So force brings the change in the object, we can see, right? Then we can see there are some types of forces. Okay, तो जैसे कि types of, there are basically two types of forces, contact forces and non-contact forces. तो मैंने बोला है कि interaction is important and this is not necessary कि interaction के लिए या for the force to be applied you actually have to touch that object and pull or push that. So if the force is exerted by one object on another when they are in contact with each other, that is contact forces.
और जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है उसमें there is no need of both the object to come in contact. Yes, there are certain cases, we will just learn those cases very shortly, but ऐसे केसेस है जहाँ पे देर इज नो नीड ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट टू एक्चुअली कम इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, तो भी द फोर्स कैन बी एक्सर्टेड ऑन दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, नाउ लेट अस सी दी कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें दो टाइप्स है, मस्कुलर फोर्स एंड है फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. दैट वी विल सी वन बाय वन, देन यू विल अंडरस्टैंड. और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसमें है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. अभी ये जो नॉन कॉन्टैक्ट के एग्जाम्पल देखे उसमें से आपको समझ ही आ गया होगा. ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन. लेट अस सी दी कॉन्टैक्ट फोर्सेस इन दैट मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स मतलब क्या? मसल्स. जो फोर्स विच वी आर अप्लाई बाय आवर मसल्स, दैट इज दी मस्कुलर फोर्स. वी और दी अदर एनिमल्स जो है वो जो भी फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इज मस्कुलर फोर्स. कांटेक्ट में आना ज़रूरी है ना, हमारे पास कुछ जादू तो नहीं है कि जैसे हाथ से कुछ ऐसे ऐसे किया एंड समथिंग इज फ्लाइंग और समथिंग इज मूविंग. नो, सो वी हैव टू एक्चुअली टच दैट ऑब्जेक्ट, वी टू पुश इट और पुल इट. ओके, वी टू अप्लाई द फोर्स. तो वैसे ही इफ़ यू आर पेडलिंग अ बाइसिकल, इफ़ यू आर रनिंग, और इफ़ जो हॉर्सेस है, जो कैमल है या डोंकीज है, एलिफेंट्स, ये जो है, ये जो दे आल्सो यूज देयर मस्कुलर फोर्स, राइट? दे आल्सो यूज द मस्कुलर फोर्स टू परफॉर्म देयर वेरियस टास्क. So muscular force, which is the contact force and that is supplied by the muscles of our body. Okay, then next है force of friction. What is force of friction? It is a force which opposes the motion of an object. जैसे कि बॉल है, बॉल को रोल करो तो वो कुछ टाइम बाद रुक जाता है, राइट? तो देर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये फ्रिक्शन का आपको अलग से लेसन है नेक्स्ट वाला, देन वी विल लर्न इट इन डिटेल. सो फॉर नाउ यू कैन जस्ट कीप इन माइंड that force of friction is a force which will oppose. What is friction? It will oppose the motion of an object. जैसे कि बॉल है rolling on the ground, it will stop after some time. क्यों stop होता है? Ground is trying to stop that. Ground क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है बॉल पे कि बॉल रुक जाए, तो दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके, या फिर इफ वी स्टॉप पेडलिंग अ बाइसिकल, तो वो भी स्लोली इट विल ग्रेजुअली स्टॉप, द बाइसिकल विल ग्रेजुअली स्टॉप. क्यों? क्योंकि रोड इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. आपने ब्रेक लगा लिया, मतलब क्या? यू आर अप्लाइंग अ फ्रिक्शन. वो ब्रेक जो है वो टायर को क्या करता है? इट स्टॉप्स मूविंग, राइट? सो दैट इज द force of friction. So these are the contact forces. The remaining we will see in the next video. By that time you take care of yourself. Stay home, stay safe. Bye.